you. Can you hear me? Yes, ma'am, I can hear you clearly. Great. So, Atul, can you tell me something about yourself? I need to understand you before I take your training and make you comfortable. What are you doing? What are your plans? Why are you going Europe for further studies? Can you just tell me Yeah. in 1 or 2 minutes in English? You can take time if you want to prepare. Yes, ma'am, I can try. Uh, First, first of all, my name is Atul Kumar Verma, and I'm going to study in Italy because um because I prefer universities there because they are very prestigious universities there that can be better for my future career and the path I want to walk on. That's why I prefer going to universities in Italy. So, what you have done till now? What qualification you have attained till now? And from which Yeah, school or college? Hmm. I have completed my matric from Kendriya Vidyalaya, uh, Okay. and I have completed inter from Manav Bharati Public School, and next I'm applying for graduation from So you're planning university. your graduation from Europe. You have done your schooling till 10th in private government school, and for 2 years you did your Manav Rachna, which is a private school, right? Yeah, yes, ma'am. Okay, good to go. So we'll be starting with your communication class, wherein we will discuss a lot of things. I'm expecting more candidates to join. Janvi, can you hear me? Janvi has joined. Gaurav Kumar, can you hear me? Janvi, can you switch on your camera, please, all of you? Can you switch on your camera? So Gaurav, can you hear me? Yes, Introduce yourself, please, for a minute or so. Don't feel shy. Be open and just communicate. okay. No, ma'am. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Gaurav. I was just senior secondary school in commerce stream, and I am studying BCA in Delhi. And now I am planning to go abroad for my higher education. My study goal. Okay, ma'am. I Okay. like Hmm. You like what? I like a game such as cricket and badminton, but I dislike a smartphone because it is a waste of time and waste of. Okay. What is the purpose of going Europe now? Why do you want to go Europe? I am selected Malta because Malta is a Mediterranean sea. It's like paper boat. It is situated in the center part of the Europe, and Malta is a beautiful city according to me. No, no. Malta is Malta, beautiful. It is part of Europe. I got it. What is the purpose of going there? Why do you want to go there? For work, for study? What is the purpose? my primary focus on my study. Okay. And which course you have opted for? Uh, Bachelor of Business Masters of Business Administration. MBA you have opted. No, Hospitality and Tourism Management. Hospitality and tourism management. And what is your qualification otherwise? Have you completed your graduation till now? No, no. Recently, I am say that I will just complete my senior secondary school in commerce. Sorry, I could not hear you. You have completed your? Senior secondary school in commerce stream, Okay, and from which school you have done that? government school. Okay, and the purpose is to go for graduation now in hospitality and tourism, right? Yes. Okay, great. Okay, guys, good to know both of you. I'm expecting couple of students to join more. Then we'll start with the communication class. First of all, we'll definitely improve and work on your introduction because there are a lot of points you can add and do it in a proper way. So we'll do that introduction shortly. I'm expecting couple of students to join more. Meanwhile, you can have a pen and paper with you because you may have to write certain pointers to help you communicate better. Atul, you have a pen and paper. Meanwhile, you can go and get it. Yes, I have already. Yeah.
योगेश जी 2 और बच्चे ज्वाइन कर रहे हो ना अभी? ठीक है, तो हम लोग साथ ही स्टार्ट करते हैं, तब तक ये लोग थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन पे प्रिपेयर करो। आई टेल यू हाउ टू गिव अ बेटर इंट्रोडक्शन शॉर्टली। अमित क्लास नहीं ज्वाइन करी बेटा। तो बेटा 5 मिनट पहले स्टार्ट कर लिया करो, सब बच्चे बैठे वेट कर रहे हैं। Okay, Gaurav and Atul, we can start, I guess. Meanwhile, more students will join. So let's see how to give a better introduction. Note down certain pointers I'm telling you. Then I'll give you 5 minutes time to fit yourself in those pointers. I think others are joining. Amit and Janvi have joined. Let's wait for 1 more minute. Yeah, Amit and Janvi, can you hear ma'am, me? I'll tell you about the objective of these students. Gaurav is going to apply for a Malta, so he might have an interview in VFS office, right? Okay, so his Atul, purpose is VFS interview, right? yes, and Atul, I have already told you that he will be going for a ICE program, right? Haan, so this for IELTS, right? Janvi has a very good communication, and she is going to interview in Masters Union, Okay, MU, got it. MU, which is affiliated to Right. TU and all, right? You and all, right. Yes. Amit and Gaurav is in the same boat. Amit is also Amit planning and to go Gaurav, to Malta. Yes, Malta. Okay, right. So they might have an interview in VFS office. So got these it. are their objectives. So they just need to learn what all needs to talk about in their interview, in their personal introduction, and the Got it. fluency and the correct vocabulary, correct platform, which you know already. So over to you, Hmm. ma'am. Now you will be taking care of the class, right? Done. Done. And Fair all enough. the students, she is Preeti ma'am, she is our associate, she is with the Global Shiksha. तो आपको कोई भी क्वेश्चन तो ग्रुप में मैम का नंबर है, मैम आपको होमवर्क देगी, उस पे आप वीडियो बना के भेजो, वॉइस रिकॉर्ड करके भेजो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सको करो आप, ठीक है। और मैडम डायरेक्ट 101 टच में है, कल भी क्लास है, 1 बजे ही क्लास है, तो कल भी सबने ज्वाइन करना है, आज तो आपने कर ही लिया है। और बी ऑन टाइम। थैंक ओवर टू यू मैम। Thank you so much, Yogesh. So I request Amit Janvi to switch on your cameras if possible, please. Amit Janvi, can you hear me? Can you switch on your cameras, please? Yes, ma'am. 2 minutes. I request all of you to keep a pen and paper. We are starting in next 1 minute. So first of all, if you go for any type of interview in your life, whether it is your VFS interview, whether it is your IELTS interview, or any job interview, anywhere you go, they ask you to introduce yourself because everybody wants to know who you are, what are you doing, what are your plans, what are your objectives. Considering that thing in mind, we should know how to give a proper introduction. So we are going to discuss the parameters in which you will give a proper interview in a proper flow. I request all of you to note down that parameters and then we will practice how to give the self introduction in next 10-15 minutes. So first line, every time you can say thanks for giving me an opportunity to introduce myself. You can write it down. Thanks for giving me an opportunity to introduce myself. Amit Janvi, I'm still waiting for your cameras. Thanks for giving me an opportunity to introduce myself. Good, Amit, you switched on your camera. Janvi, can you switch on your camera, please? In online class, it is very important to have proper camera because we are not doing it face to face or we are not meeting in person. The first line is thanks for giving me an opportunity to introduce myself. Then your complete name. Complete name has to be given always.
Then your current experience, if you have any experience, tell about your experience. If you don't have any experience, tell about your qualification. So current experience and qualification. First of all, your complete name, then tell about your current experience and your qualification, then talk about your family, complete name, current experience and qualification, about your family, then your likes, your dislikes, then your strength, your weaknesses, your strength, your weaknesses, then your short term goal and long term goal, then your short term goal and long term goal. Now these are the parameters based on which you will give your introduction. I give you 5 minutes. Just prepare your introduction as per the parameters. Then I will listen to each one of you individually and we will work on it to improve it better. So next 5 minutes is for you to make it in a proper flow and as per the parameters. Yogesh, I think Janvi has logged out by mistake. Janvi has logged out by mistake 5 minutes back. Can you recheck with her if she's joining? Okay, got it. No problem. Let her join from laptop. No worries, no worries. Janvi, can you hear me? Hello. Now, can you hear me? Yeah, ma'am, I can hear you from this device. Okay, so have you heard whatever I was saying for that parameters of introduction or shall I repeat quickly? Ma'am, I don't listen it. I don't heard it. It is okay, I'll repeat it for you. Do you have Okay. a pen and paper to write it now? Yes, ma'am. Okay, so first line for self introduction is thanks for giving me an opportunity.
Thanks for giving me an opportunity to introduce myself. Then your complete name, Okay, ma'am. then your current experience if you have any experience, current experience and qualification. If you don't have experience, then tell about your qualification. Okay, ma'am. Then about your family, Okay, ma'am. your likes, your dislikes, Okay, ma'am. strength, weaknesses, strength, weaknesses, Yes, ma'am. short term goal, long term goal. Okay, ma'am. Short term goal, long term goal. Now they have already started preparing the introduction and they are almost ready. You take 5 minutes and prepare your introduction as per these parameters. Okay, After ma'am. 5 minutes, we will listen you and I'll tell you how to improve it better, right? Okay, ma'am. So you can mute yourself. Now Amit, Gaurav and Atul, who is ready for your introduction? If possible, all of you are requested to switch on your camera. Don't switch it off, please. Atul, are you ready? Do you want to try it? I will try it in 2 minutes. No problem. Take your time. क्या हाल है सर? गुड गुड। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। हाँ उनको बाहर ही ले लिया करो ना इंटरव्यू। हाँ ठीक है। ठीक है डन। वो मीटिंग वाले रूम में ही ना। हाँ ठीक है। क्योंकि ना ये तो एक दो बच्चे प्लान नहीं आए। अलाउ भी नहीं करते हैं हमारे क्योंकि जो इंटरव्यू वाले बच्चे होते हैं ना उनको फ्लोर पे ही अलाउ नहीं करते। नहीं नहीं मैं ध्यान रखूंगा। और इनका तो मतलब पता ही नहीं होता। जैसे आज मेरे को अभी कुलीग है रेनू, वो छुट्टी पे है, वो कोऑर्डिनेट कर रही थी, तो उसका फ़ोन आया सर कोई मिलने आया रिसेप्शन पे। अब मिलने आया हमें समझ ही नहीं आई। वो आके उसने रिज्यूमे दिया तो मैं कहा अच्छा इंटरव्यू हुआ है, तो इसको आगे इसको कोशिश करो जो मतलब हाँ वही के वही निपटा दें। Ma'am, may I try? डन डन। Yes, if you're ready, you can try, please. Yes, ma'am. So, thanks for giving me an opportunity to introduce myself. I'm Amit Singh. I hail from a small town in Nainital district, in northern part of my country. I have done my 10 plus 2 from convent school in my hometown. Talking about my strength and weakness, foremost, first and foremost, my strength is my family, which supports me a lot. And talking about my weakness is that I trust people very easily. Going towards my family, there are five of us. As Talking about hobbies, as I'm a fitness enthusiast and health conscious, so I like to work out and to maintain my diet and all. So my short-term life goal is to go Malta for my higher education, and talking about my long-term goal is to become one of the greatest nutritionist and dietitian. Okay. So best part with you is Amit, you fitted your introduction, discussion in proper parameters. What you need to improve the most is your way of speaking. You need to be little slow. Okay, ma'am. Okay. So you need to have slow down your pace and you need to be more clear in pronouncing the words. One Okay, thing ma'am. when you speak very fast, the pronunciation of words does not come properly. So go Okay, little ma'am. slow. The more slow you will speak, your pronunciation of words will improve, and the clarity of words will help the examiner to understand you better. Okay, ma'am. We will do it again in 5 minutes. Let others try. Meanwhile, Atul, over to you. Thanks for giving me the opportunity to introduce You're myself. forgetting My Malta name is again. Adnan. I'll start again. Thanks for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Atul Kumar Verma and I came from Gaya, Bihar, and I have completed my 10th from Kendriya Vidyalaya, which is a government school,
and after that I have studied till 12th from Manav Bharati, which can be considered a private school. And my my family is considered of four: my mother, father, and I have a little sister who is she has studied in sixth class now. And there are not many things that I like, uh, and Okay, no problem. There is some yes, hesitation. This practice will yeah, only help you to overcome the hesitation. I will tell you yes, what you can speak about your family in a better way in a while, but we need to practice your okay, introduction more and more, more and more. You can also record and listen your introduction. You will also understand where are you making mistakes. okay, So ma'am. homework for all of you by default is you have to record your self introduction and share to me by evening. That is, you have to do it today. Before sharing to me, listen your own recording and you will understand where are you making mistakes. Okay, before I tell you how to speak better, Atul, I want Gaurav to try once. Yeah. Good evening, ma'am. Thank you. You can give me this opportunity to introduce your myself. My name is Gaurav. My qualification, I will just complete my senior secondary school in commerce stream. Now I am planning to go abroad for my higher educations. Uh, I have a five member. My mother is a housewife and my father is a work in the private sectors. We are three siblings, my sister and me. I like a game such as football, badminton, and cricket, and many more. But I dislike a phone because sometimes it is a waste of time and waste of money. Sometimes it is a distract me in lots of situations. And my strengths are I am a self-motivated motivation person and I have a strong communication skills also. My short-term goals I have a achieve my short-term goals. I will just complete my hospitality and tourism management, and my long-term goals I have achieve some degree and master degree. Thank you. Okay, Gaurav, what do you feel? Was your introduction good, very good, or excellent, or below average? अपने आप को रेटिंग दो 0 to 9 की स्केल पे अपना इंट्रोडक्शन. या नहीं मैम मैं दोबारा रिपीट करना एक बार. गिव योर सेल्फ रेटिंग. आपने अपने आप किया, आपने जो स्पीकिंग बोला उसमें 0 to 9 की स्केल पे आपको अपने आप को मार्क्स देने हो, बैंड्स देने हो, तो आप क्या बैंड्स दोगे अपने आप को? हाँ, कितना दोगे? 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 कितना दोगे? 5. How much? 5. Okay, I'll give you 5.5. Now from 5, how to go to level 7? Going till level 9 will be tough, but from 5 to 7 you can easily go. First of all, you also need to go little slow in your speaking. देखो हम फास्ट क्यों बोलते हैं, उसके दो रीजंस होते हैं, या तो हमें आता है या बिल्कुल नहीं आता. आपको आता है लेकिन आपको घबराहट इसलिए है क्योंकि आपको पूरा नहीं पता और डर है कि मैं गलत बोल जाऊंगा, तो आप जल्दी जल्दी बोलते हो उसको खत्म करने के लिए. तो खत्म करने के लिए मत बोलो, उसको ऐसे बोलना है कि सामने वाला जो हमें सुन रहा है उसको समझ आए कि हम क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्या क्या किया हुआ है हमने लाइफ में. और वो तभी होगा जब अपना पेस थोड़ा स्लो डाउन करोगे, अपने वर्ड्स को क्लियरली प्रोनाउंस करोगे, और क्वालिटी वर्ड्स, जैसे आपने बोला आई हैव लिटिल सिबलिंग, किसी ने बोला था, अब लिटिल सिबलिंग इज नॉट द राइट वर्ड, आई हैव यंगर सिबलिंग. तो उन वर्ड्स को कैसे चेंज करना है वो वर्ड्स मैं आपको भी बता देती हूँ. जानवी, आर यू रेडी? Ma'am, please give me 2 minutes. Sure, you can take 2 minutes. Okay. After Janvi, I will tell you how to give your introduction in more better way. Let her try next 2 minutes. We can wait for 2 minutes. मैम एक बार दोबारा ट्राई कर सकता हूँ. स्पीड थोड़ा नॉर्मल मतलब लो लो रखना है इसका.
ट्राई करो. Good afternoon, ma'am. Thank you. You can give me this opportunity to introduce your myself. नहीं, पहली लाइन ही गलत है. थैंक्स फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी. आप लिख लीजिए ये लाइन. Ma'am, I'll speak slow. आप लिख लीजिए. थैंक्स फॉर गिविंग मी this opportunity to introduce myself. Thanks for giving me an opportunity to introduce myself. Thanks for giving me an opportunity to introduce myself. अब पहली लाइन thanks लिख ली for है. giving me opportunity to introduce your myself. थैंक्स फॉर टी उसके साथ एस भी बोलना है. थैंक्स फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. ठीक है, अभी आप दोबारा ट्राई कर सकते हो. गो हेड. Hello. Ma'am, can I जानिए, start? 1 मिनट वेट करो. गौरव अभी Okay, थोड़ा सा ma'am. मोड में है. लेट हिम ट्राई. Okay, ma'am. Thanks for giving me opportunity to introduce your myself. My name is Gaurav. My qualification I will just complete my senior secondary school in commerce stream. Now I am planning to go abroad for my higher educations. I have a 5 member. My mother is a housewife and my father is a work in the private sector. We are 3 siblings, my sister and me. I like a game because I am a sportsman and I am a sports person because I like a game such as badminton, cricket, and many more. I dislike a phone because it is a waste of time and waste of money. Sometimes it is a distract me in any situation. My strengths are I am a self motivation person and I have a strong communication skills also. My short term goals I will just complete my hospitality and tourism management, and my long term goals I have achieved a lots of degree and thank you. ओके गौरव, बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स हैं. ग्रामर वाइज थोड़ा सा वर्कआउट करना है और पेस पे अभी भी तुम्हें काम करना है. अभी जानवी को सुनते हैं, ध्यान से सुनो. और फिर मैं इंट्रोडक्शन देकर दिखाऊंगी, उसको भी ध्यान से सुनना ताकि जब तुम बोलो तो बेटर हो जाए. ओवर टू यू जानवी. Yes, ma'am. या प्लीज स्टार्ट. Thank you, ma'am, for giving me this opportunity to introduce myself. I am Janvi Agarwal. I live in Ghaziabad. I just completed my 12th and I scored 82% in PCM. I have a joint family. My father is a businessman, my grandfather is a politician, and my mother is a housewife. So, about my liking, as of now, I like to go gym and driving and have some adventure. About my dislikes, that what I dislike is I am an introvert person, so I interact with few. And my short term goal is to start a startup, a small startup, and long term goal is to create a huge empire so that I can hire persons for me. Thank you, ma'am. Okay, Janvi, good try. And the content was also fine, but we can add more points to it to make it more better. So I'm giving the self Okay, ma'am. introduction. If you can listen it properly, thanks for giving me an opportunity to introduce myself. My name is Preeti Marwa, and I have 15 years of experience in training industry. I'm MBA Finance by profession and done 4 5 certifications in communication and language training. Apart from that, I'm also a content writer and I've contributed to a lot of articles and books writing. I'm blessed to be a part of nuclear family, staying with my husband and my in-laws in Delhi itself. I like playing cricket. I don't like reading books. Honesty is my strength. Trusting people easily is my weakness. Clearing my IELTS exam is my short term goal. Settling abroad is my long term goal. Thank you. Or you can also say joining hospitality and completing that hospitality course is my short term goal. Having my own business, becoming an entrepreneur is my long term goal. Thank you. So, did you get an idea from listening me, listening Janvi, all three of you? Because जानवी का थोड़ा कम्युनिकेशन रिलेटिवली स्ट्रांग है. उसको सुना, मुझे सुना. आप तीनों को कुछ बेटर लगा? Yes, ma'am.
अभी दोबारा से 5 मिनट लो सभी लोग। जानवी तुम कंटेंट पे वर्क करो कि और क्वालिटी कैसे ला सकती हो, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं है। Yes, बॉयज ma'am. अपना पेस पे काम करेंगे, कंटेंट पे काम करेंगे और क्वालिटी पे काम करेंगे। सो आई गिव यू 5-7 मिनट्स, वर्क ऑन इट, वी विल डिस्कस दिस अगेन टू मेक इट परफेक्ट टुडे। आज सबको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए 2 बजे से पहले। एमबीबीएस के हमारे 5 एडमिशन क्लोज के कगार पे हैं। ठीक है, हाँ हो जाएगा बस। और बढ़िया नहीं। ठीक, ओके ठीक है। मैं आनंद को फ़ोन कर रहा हूँ इधर, आप करोगे बात? आनंद क्या? हाँ बात कीजिए, पूछिए क्या प्लान है सर। जहाँ ज़रूरत लगी आपसे करा दूँगा, ठीक है। ये मैंने पूरा पढ़ लिया। सर नमस्कार। सर कैसा रहा आपका ट्रिप? अच्छा अच्छा, मैं तो अपनी तरफ से आपको एक दिन दिया था कि आप रेस्ट कर लो। मंडे आ रहे हैं आप ऑफिस? ठीक है सर, ठीक है। और भी मेरे को आपके कॉलेज से भी रिलेटेड बात करनी थी, तो आप प्लान कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, ओके। मंडे आ रहा हूँ, मंडे बैठते हैं, मैं मंडे पूरी कोशिश करूँगा, मंडे बैठ के मिलते हैं, मंडे आता हूँ। टिकट 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 मैंने आज सुबह आया हूँ, कल शाम को आने का प्लान था, आज सुबह आया हूँ। दूसरे बच्चे का क्या नाम है? हाँ, दूसरे बच्चे का क्या नाम है? अपना जो यहाँ पे है उनका लिट्टी से नाम है। दूसरे बच्चे का क्या नाम है? प्रवीण। प्रवीण। उसका कितना है? प्रवीण। सैफी का कितना है? 26। 15। सोनू। एक जीरो का लगाइए। पचासी। ऑलरेडी मतलब अगर आप 35 करो तो हो गया। स्क्रिप्ट अच्छी दी है। ये आज पहला क्लास है इसका बच्ची का, थोड़ा आप ले लेना क्योंकि आपको समझ में आ गया है ना कि वहाँ पे कैसे एडमिशन हो रहा है। थोड़ी देर के लिए आप ले लेना। अच्छा वो गोयल साहब की बेटी आई? डीपी गोयल बात होगी, उनका तो लेट हो गई यार, आज तो वो बाहर निकले हुए हैं घूमने। हाँ। तो यार मैंने कहा मैं सर को कल से फ़ोन कर रहा हूँ आपको। अगली क्लास कब है? मैं कल करता हूँ, कल करता हूँ, कल करता हूँ मैं, ठीक है भाई। सब सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं कह रहा भाई मैं बैठा हूँ, डी यू की डिग्री मिल रही है। चाइना वाले का क्या अपडेट हुआ? ये सीधा गोली मारता। साहिल। हाँ साहिल कहाँ पे पता है? आप ही अच्छा मैंने नंबर दिया था ना निखिल को, मैं गलती से पूछूं। वेरी गुड, ऐसे ही पूछो, सुनो, लेके जाओ, फीडबैक लेके जाओ। कटिंग अच्छी कराई है तूने, गर्मी बहुत है, और छोटे करा ले। इसको सैलरी की टेंशन है, इसको प्रमोट कर दिया मैंने, अगले महीने आपको 16,000 देंगे सर ने कहा। और इन्होंने पहले कह दिया, मैंने बाद में बोला कि प्रवीण कह रहा था बढ़ाने के लिए, कहते नहीं बच्चा बढ़िया काम कर रहा है। थैंक यू टू हिम।
यार देखो, दो लाइनें नहीं लिखी गई, दो लाइनें नहीं लिखी बस। ग्रेजुएशन है, 4 साल का, 4 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें से एक प्रोसेस यूएस का प्रोसेस था। Any one of you who is prepared can start. Who needs time can wait for next 2-3 minutes. 16 साल का एक्सपीरियंस है, पढ़ाने का ही, पढ़ाने का ही। ब्रिटिश काउंसिल में पढ़ाया है, बड़ी सारी अच्छी अच्छी जगहों पे पढ़ाया है। निखिल, पानी की बोतल है कोई भी? बाबू चाइना वाले से बात हो गई थी। मैं तो यहाँ से कॉल करवा के तुम कॉल 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 उठा लो क्या? ऐसे करता हूँ। चाइना वाले कल फ़ोन नहीं उठाया था, तो कॉल करो एंड एक नंबर देता हूँ उससे कर, या एक काम करो मेरे नंबर से कॉल करो और फिर मेरे को नंबर पे मैं कॉन्फ्रेंस कॉल कर देता हूँ। ठीक? मंडे को ट्रेनिंग कराया था सर, तीन का। कराओ, बच्चे मोटिवेट हो गए थे। ट्रेनिंग के लिए हाँ, हाँ तो करा रहा हूँ ना, बुला रहा हूँ ना। Can we try Janvi again? Meanwhile, others are preparing. Yes, ma'am. Others are requested to listen her carefully, and then we will try with you also, and she will also listen the same way. Please go ahead. Thank you, ma'am, for giving me this opportunity to introduce myself. I am Janvi Agarwal. I live in Ghaziabad and I just completed my 12th. And I scored 82% in PCM in CBSE board. I have a joint family. My father is a businessman, my grandfather is a politician, and my mother is a housewife. So about my liking, I like driving, adventure, watching movies, and what I dislike is I am an introvert. So I interact with friends and with few. My short term goal is to open a small startup and long term goal is to be an entrepreneur. And strength, about my strength is my family because when I feel low, they motivates me. And weaknesses, so trusting people is a weakness to me. And thank you, ma'am. Trusting people easily is my weakness, and doing so and so course is my short term goal. Becoming an entrepreneur is my long term goal. So, those two parameters, short term goal and long term goal, need to be added at the end. Okay, ma'am. Okay, so good try. And the content, the paces, everything is fine. Try to fit those parameters in the end and complete it before you wrap up. Okay, so Okay, Atul, ma'am. Amit, or Gaurav, whosoever is ready, can you start now? This is to practice and share the feedback. Please take feedbacks in a positive way so that you can improve and become better. अभी गलती करोगे तो I'm here to help you out. वहाँ गलती करोगे तो वो mistake हो जाएगी. So go ahead, any one of you who is ready. हेलो, कहाँ Uh, हो? कहाँ हो, कहाँ हुआ? it's my Okay, mic Gaurav. turn now. Let Gaurav try. उसने thumbs up दिया, I guess वो पहले try करेगा. फिर अतुल try कर सकता है और फिर अमित. Gaurav, go ahead. Okay. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Thank for me give me this opportunity to introduce your myself. My name is Gaurav. I am from Delhi. My qualification I will just complete my senior secondary school in commerce stream. Now I am pursuing BCA in Delhi University. Now I am planning to go abroad for my higher educations. Uh, I I belong to nuclear family. I like a game. I dislike a smartphone because sometimes it is a waste of time and it is a distract me in lots of situation. To be honestly, my strengths are I am a self-motivated person and I have strong communication skills also. But my short-time goals, I will just complete my hospitality and tourism management, and my long-term goals to be build a business in the same field.
थैंक यू मैम। ओके सो गौरव, फ्लो अच्छा था, तुमने एज पर पैरामीटर्स फिट कर दिया उसको, बट अभी तुम्हारा ग्रामेटिकल एरर थोड़ा वर्कआउट करना है और उसको बेटर कर सकते हैं। जैसे तुमने बोला कि जो तुम्हारा क्वालिफिकेशन है, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम सो एंड सो स्कूल, ऐसे बोलो, ओके मैम। ठीक है। और उसमें आप ये भी ऐड कर सकते, और पहली लाइन जो बोली थी, थैंक्स फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, वो आधी अधूरी बोली थी और ठीक से नहीं बोली थी। देन टेल अबाउट योर स्कूल, योर क्वालिफिकेशन एंड टेल कि आप हायर स्टडीज के लिए कहाँ जाना चाहते हो। उसकी भी एक लाइन बोलना चाहते हो तो बोलो, नहीं बोलना चाहते इट इज ओके। क्वालिफिकेशन, करंट क्वालिफिकेशन का मतलब है कि अभी तक कितनी पढ़ाई करी है, मैंने करंट वर्ड बोला था। देन आई एम ब्लेस्ड, आई हैव न्यूक्लियर फैमिली से बेटर लाइन आप बोल सकते हो, आई एम ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली विच इंक्लूड्स माई पेरेंट्स, मेरे माँ बाप, एंड मेरे सिबलिंग्स यानी भाई बहन। फिर आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, जो आपको खेलना अच्छा लगता है। आई डोंट लाइक रीडिंग बुक्स, जो करना अच्छा नहीं लगता उसको बोल दो। आपकी स्ट्रेंथ क्या है बहुत क्लियरली बताओ। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज माई स्ट्रेंथ, ट्रस्टिंग पीपल इजिली इज माई वीकनेस, going abroad, doing my hospitality and tourism is my short term goal, becoming the entrepreneur in long is my long run goal, या बोल सकते हो having my own successful business is my long run goal। तो वर्ड्स को और बेटर करो, उसको क्लैरिटी से बोलो, ये अभी फीडबैक है। आपको फिट करना आ गया पैरामीटर्स पे, लेकिन क्लैरिटी पे और पेस पे अभी भी काम करना है, और ग्रामेटिकल एरर्स पे। नेक्स्ट कैंडिडेट अतुल। Thanks for giving me the opportunity to introduce myself. I am Atul Kumar Verma, and I have completed my 12th from Manav Bharati Public School, which is a private school, and, uh, and I am delighted to have a nuclear family, which consists of my विच father, my इंक्लूड, विच इंक्लूड्स, कंसिस्ट यहाँ पे यूज नहीं होगा, विच इंक्लूड्स, which includes my mother, father, and younger sister. which Who is includes my parents and sibling। oh yes, ma'am. बेटर वर्ड, Which includes पेरेंट्स एंड सिबलिंग, सिबलिंग मतलब भाई बहन, पेरेंट्स में माता पिता दोनों आ जाते हैं। विच इंक्लूड्स माय पेरेंट्स एंड सिबलिंग, और अगर दो भाई बहन है okay, तो सिबलिंग्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। okay, ma'am. ट्राई अगेन, दोबारा से स्टार्ट कर। Yes, ma'am. Thanks for giving me an opportunity to introduce myself. I am Atul Kumar Verma. I have completed my 12th from Manav Bharati Public School, which is a private school, and my I am delighted to have my parents and siblings, and I like reading. I like reading, and I dislike a crowded environment. And my strength is that I'm a self-dependent person, and I can blend in any type of environment. And my weakness is that I have very few experience uh, to interact with person. It's considered that I'm an introvert person, which is like my goal is to complete my IELTS exam, and my long term goal is to study in Italy and graduate from there with a माय good mark. लॉन्ग टर्म गोल इज टू सेटल अब्रॉड, दैट्स इट। Yeah, my और long term आइलेट्स goal is to होता है, settle abroad. आइलेट्स नहीं होता है, आइल्स होता है, आइल्स बोलो। IELTS, हाँ, आइलेट्स नहीं, आइल्स। IELTS. ठीक है अमित, ओवर टू यू। Okay, ma'am. Thanks for जल्दी giving ट्राई me an करो। हाँ, opportunity to introduce myself. I am Amit Singh. I hail from a small town in Nainital district. I have done my high schooling from Army Public School and intermediate from convent school. Talking about my strength is that uh, okay, मैम थोड़ा सा प्रिपेयर करने को टाइम अच्छा दीजिए। जा रहा था अमित, पहले से बेटर जा रहा था, पेज पे तुमने काम किया, कंटिन्यू करो, घबराओ मत। और कोई भी स्टूडेंट ये मत बोलो कि सीधा बोलो आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम सो एंड सो स्कूल, स्कूल का नाम बताओ,
गवर्नमेंट से करा है, प्राइवेट से करा है, वो मत बोलो। वो सिर्फ इसलिए डिस्कस किया जाता है कि मुझे समझ आ जाता है कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, उसको किस तरह से हेल्प करना है। बट यू डोंट से कि मैंने पब्लिक से किया, प्राइवेट से किया, आप सिर्फ स्कूल का नाम बताएंगे, दैट्स इट। आप अमित दोबारा ट्राई करो, और अच्छा बोल रहे थे, कंटिन्यू करो, रुको मत। रुकोगे तो दोबारा से ट्राई करना पड़ता है। Okay, ma'am. Okay. Thanks for giving me an opportunity to introduce myself. I'm Amit Singh. I hail from a small town in Nainital district. I've done my high schooling from Army Public School and then intermediate from a convent school. Talking about my strength is I'm a very honest person, and moving to my weakness is I trust people very easily. Talking about my family, there are five of us, and I'm blessed that I'm a part of a nuclear family. uh, my short term goal is to go Malta for my higher education, and my long term goal is to become one of the best nutritionist and dietitian in the world. Good one, Amit. This is better. And the pace is also fine, flow is also fine. And content पे भी थोड़ा काम किया है और improve करेंगे. Now, next question for all of you. If you go to any interview, they can ask you this question: what motivates you the most? कौन सी चीज ऐसी है जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है? टेल एनी टू थिंग्स विच मोटिवेट यू मोस्ट इन द लाइफ, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है या मोटिवेट करती है। ऐसी कौन सी दो चीजें आप एक बार सोचिए और फिर हम डिस्कस करते हैं इस पे। Yes. So Janvi, what motivates you the most? Yes, ma'am. My mother and my friends are the two people which motivates me the most. Okay, Atul. My mother and father are the people who motivate me the most, I think. ओके, तो मदर फादर है तो इसको आप पेरेंट्स बोल सकते हो। माई पेरेंट्स आर माई ग्रेट मोटिवेटर, ऐसे बोल सकते Yes, ma'am. Okay. हो। बोलो। My parents are my great motivator. गुड। गौरव। Parents are motivate me in all situations, financially and study. माई पेरेंट्स आर ग्रेट मोटिवेटर, ऐसे बोल सकते हो गौरव। Yes, कंसाइज, टू द पॉइंट और क्वालिटी आंसर मैटर करता है। 100 वर्ड्स लिख रहे हो और वो यूजलेस है, कोई फर्क नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। 10 वर्ड्स लिख रहे हो लेकिन क्वालिटी वर्ड्स है, उसका फायदा होता है। अमित, ओवर टू यू। अमित, व्हाट मोटिवेट्स यू द मोस्ट? I think my biggest supporter is me, myself, and I. Okay, so the person who can motivate me is myself. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? या ऐसे पूछ सकते हैं, या व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, अपने फ्री टाइम में आप क्या करते हैं
या अपने फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? दोनों का आंसर एक ही होगा। 2 मिनट लेके सोचो। व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? रेस्ट हो गया। चल ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, मुझे अतुल था ना, बिहार वाला, कल रात को उसका अमाउंट आ गया। उसका काम शुरू हो गया। ठीक है। मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है। अच्छा हाँ, अभी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, हरीश का फ़ोन आया था। तो मैंने कहा कहाँ पर है? कहता सर भाई छुट्टी हूँ, घर के आसपास ही हूँ, बताओ। आपका मैसेज आया था। मैंने कहा मैं क्लास के बाद तेरे को फ़ोन करता हूँ। तो बाहर गया हुआ था, मैं अभी रील्स देख रहा था। कहता हाँ मैं कल रात को ही आया हूँ वापस। मैं चल ठीक है, करता हूँ फ़ोन तुझे। फिर आपका मैसेज आ गया, ये लाख वाला। अब मैं क्या बेस बना के बात करता हूँ? मैं इस क्लास के बाद फ़ोन करता हूँ, 10 मिनट रह गए, क्लोजिंग मैंने देनी है। हाँ ठीक है। हाँ, फिलहाल मैं आपको 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। और ये ध्यान रखना, मैंने कल की कोई बात नहीं करनी सुधीर से रिलेटेड। को क्या हो रहा है, क्या हुआ, कुछ नहीं। लेट इट बी, मतलब लेट हिम कम आउट ऑफ इट। ठीक है, मैं उसको कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। मुकेश का पता, पर अभी मैं 50 ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तेरे को, आप रखो उसे, मैं उससे हिसाब कर लूँगा। हाँ हाँ हाँ, मेरे सामने है। हाँ, तो अभी आप 50। हाँ ठीक है ठीक है। Okay, so Gaurav, what do you like to do in your free time? In my free time, I listen English song because it is a improve my English speaking. Okay, simply say in my free time I listen English songs. That's it. Okay. Amit, Yes, ma'am. what do you like to do in your free time? So, as I've already told that I'm a fitness enthusiast, so I like to swim, and moreover, I like to work out. So, and sometimes I spend my free time with my family and friends. Okay, Janvi, what do you like to do in your free time? Yes, ma'am. In my free, I like watching movies and also things about myself, that about my future, that what I am going to be in 10 or 15 years from now. And searching new things about the world is my go to free time. Okay, so what I want to be next 10 to 15 years इसको आप better बोल सकते हो. In my free time I self introspect myself. I talk to myself and want to understand my future goals. ठीक है, अतुल, Okay, ma'am. over to you. What do you I like to do like in your to free read. time? I like to read or play in my free time. Okay, so I prefer to read and play badminton in my free time. जो भी आप Oh, खेलते हो. oh, yes. Next question. First was your introduction, then what motivates you, then what do you like to do in your free time, then why Europe, why Malta. जो भी कंट्री आप जा रहे हो, इंटरव्यू कोई भी दो, वो पूछ सकते हैं वाई दिस कंट्री. जो भी आपकी कंट्री है उसके 3 पॉइंट्स सोच लो, गूगल कर लो. वाई माल्टा, वाई यूरोप, 3 पॉइंट्स रिसर्च करो और 5 मिनट में मुझे इसका आंसर दो. एंड वाई मास्टर्स यूनियन। हाँ, वाई मास्टर्स यूनियन, वाई यूरोप, वाई माल्टा, जिसका जो भी है आप उसके हिसाब से 3-4 पॉइंट्स बनाओ एंड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट 5 मिनट्स.
करवाऊँ आपको, वो किसी पर्सनल फ़ोन पे है। अच्छा, पहुँच जाएंगे। वो सब कोई ना कोई कर लेगा, मतलब प्रदीप नहीं पहुँचे तो कोई और पहुँचेगा, सब हो जाएगा। ठीक है, मतलब ठीक है, मैं करता हूँ बात प्रदीप से। ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है, मैं करता हूँ आपको। Have you searched? Have you searched? Have you searched? I will try. Okay, go ahead. Are the very reason to choose a Malta for the further study. However, the Choose first the reason the Malta. No, choose Malta. Malta. Okay. However, the first reason the Maltese education system is based on the UK study level. The second reason the choose of the study is also affordable for me. However, the third reason the Malta is an English speaking country, so I will not face any problem to communication each other. The fourth reason the Malta is a safest country and no crime rate. Thank you. Okay, इसको और better करेंगे. Any other person would like to start? जब भी आप 3 pointers या why that country is good, why you want to go there, एक तो education system pick कर सकते हो, weather pick कर सकते हो और future opportunities pick कर सकते हो, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का atmosphere कैसा है वो pick कर सकते हो. तो आप 4 points पे आराम से research करिएगा, इसको record करिएगा, self introduction तो एक record करके भेजना ही है. Why Malta, why Europe, why MU, इसको भी audio recording मुझे शाम को 5 बजे तक सबका चाहिए. मैम और रिक्वेस्ट है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग है। ओके, वीडियो रिकॉर्डिंग एज पर सर. एंड मेक श्योर कि आप इसको सिस्टमैटिकली करें. जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन करें, रिकॉर्ड करें, एक बार उसको खुद सुने, लगे कि बेटर है, शेयरिंग करने लायक है तो शेयर करें, वरना उसको री रिकॉर्ड करें. इस प्रोसेस में 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे. एंड वाई दिस पर्टिकुलर कंट्री मैंने इसलिए टाइम दे दिया, होमवर्क में दे दिया कि आप इसको रिसर्च करो और बेटर आउटपुट लेकर आओ. मैंने एक लिस्ट दी है ग्रुप के अंदर जिसमें कुछ वर्ड्स गिवन है. एक वर्ड को उसका बेटर वर्ड क्या हो सकता है, एक फॉर्मल है एक इनफॉर्मल है, एक वर्ड का बेटर वर्ड क्या हो सकता है, उस हिसाब से वो वर्ड्स हैं, आप वो वर्ड्स अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हो. एनी क्वेश्चंस? टीम, एनी क्वेश्चंस? एनीवन से यस और नो, आवाज नहीं आ रही है आप सबको? Yes. No, No, ma'am, ma'am. no No, ma'am. problem. So I think sufficient for today. I don't want to burden you with lot of things, so that जितना किया उसको बेस्ट करो, that is the idea. और रिकॉर्ड करके आप 5 बजे तक मुझे सेंड करो एंड आई विल हेल्प यू टू मेक इट मोर बेटर.
Tomorrow we are meeting same time by 1. Make sure you have a pen and paper ready with you and revise what we have done today. Thank you, Okay, ma'am. ma'am. My pleasure. Take care, all of you. Right, ma'am. Thank Thank you. you. Thank you so much. My pleasure. Okay, thank you, ma'am, for that.